Hello everyone, welcome back, and for those who are new to my channel, my name is Aparna and I create hospitality training videos here. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे हम एक इंटरव्यू में डिफरेंट स्टैंड करें. व्हाट डज इट मीन? इंटरव्यू सेम होता है, सेम तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आपने वो सवाल आपकी करियर की शुरुआत से प्रिपेयर किए हैं उन सवालों के आंसर्स, एंड यू नो हाउ टू आंसर दोज क्वेश्चंस. The questions are: tell me about yourself, your strength, weaknesses, why you want to join our company, what value you will add once we will select you for this job role, why you want to leave the previous organization, the situations bad or good you have dealt with. तो ये सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर हमें रटा हुआ है, हमें पता है हमें कैसे देना है. But if I'll tell you that there are interesting ways to answer these basic questions, the questions which we know since beginning of our career कि हमने कैसे शुरुआत किया था इन questions को answer करना. Without wasting time, let's get to the video, and by the end of this video you will able to know how to answer the same monotonous questions in a different and attractive way to catch the attention of your interviewer. So I'm sure all of you who are watching this video, आप सभी ने कभी ना कभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर जरूर किया ही होगा. फिर चाहे वो एक प्रेशर लेवल के लिए हो या मल्टीपल कंपनीज में काम करने की वजह से मल्टीपल एक्सपीरियंस इंटरव्यू हो. You all will agree to one point that irrespective of which level you're going for an interview, आपका पहला सवाल जो पूछा जाता है वो हमेशा सेम रहता है, and that is tell me about yourself. क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल क्यों पूछते हैं जबकि उनके पास आपका रिज्यूमे होता है एंड दे कैन रीड एवरीथिंग व्हिच इज देयर ऑन द रिज्यूमे, बी इट योर एजुकेशन लेवल, योर बैकग्राउंड, योर एक्सपीरियंस एंड अबाउट योर फैमिली एज वेल, योर लाइक्स, डिसलाइक्स एंड हॉबीज, एवरीथिंग. एज एन इंटरव्यू मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है. फर्स्ट, दिस क्वेश्चन वर्क्स एज एन आइस ब्रेकर. Second, that we want to know the communication skills of the person. And third, we want to know how interesting that person is and how different the person is going to portray himself or to introduce himself to us, because वही उसे बाकी के कैंडिडेट से अलग बताएगा. So ये कुछ 2-3 रीजन होते हैं जिसलिए इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछते हैं. आई एम श्योर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का काफी बार प्रैक्टिस किया होगा इनिशियल स्टेज में अपने इंटरव्यूज के, and you all know how to answer this. But let's see how to answer it differently, including all the points which you anyways include in your answer. If somebody will ask me, tell me about yourself, how I am going to introduce myself will be like, I was always fascinated towards the tourism industry and customer service along with travel trade. So I suppose it's natural to be a hotelier. During 11 years of my hospitality experience, I've worked with brands like the Oberoi Hotels and Resorts, Taj Hotels and Resorts, Radisson Hotel Group, Roseate Hotels and Resorts, also with Antara Senior Living. तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ इंटरव्यूअर को एक बहुत क्लियर पिक्चर दिया दैट मुझे बचपन से क्या पसंद था, क्योंकि मुझे वो चीज पसंद थी इसलिए मैंने उसके लिए पढ़ाई की और इसीलिए मैंने उस लाइन में जॉब की. दैट मीन्स आई एम डूइंग समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट, राइट? सो इट लीव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट. इसके बाद आप सम अप कर सकते हैं, while working with these prestigious organizations or brands, I have learned a lot. However, now I am ready for the new challenge. तो इसमें आप क्या दिखा रहे हैं कि you are being thankful to those companies you have worked in your previous jobs, and क्योंकि आपको लगता है कि उन्होंने आपकी करियर बिल्डिंग में हेल्प की है, बट नाउ अब आप ओपन हैं डिफरेंट चैलेंजेस, डिफरेंट लेवल्स के लिए, इसलिए आप इस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं. So overall, this gives a basic information about me, about my background, right? And बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, but this is an interesting way. Now you will say that this is your way to introduce, right? अब आपका कैसे होगा? So all of you who are from front office background can use the same line till here, and then you can add your number of years you have spent in the industry, and of course your hotels where you have worked.
अगर आप F&B से हैं या किचन से हैं या आप हाउसकीपिंग से हैं तो आप कस्टमर सर्विस ट्रैवल ट्रेड की जगह पर अपने एरिया स्पेसिफिक या डिपार्टमेंट स्पेसिफिक वर्ड्स डाल सकते हैं. लाइक हाउसकीपिंग कैन keep some word which is related to cleanliness, hygiene, and keeping the area neat and tidy, something like that. F&B person can include something like you are very passionate about dressing the table for the guest and showing hospitality to them. And food production वाले लोग बोल सकते हैं that how passionate you are or you were in past as well about the food and the food philosophy and uh, how it actually give you energy to prepare food for people passionately. तो आप इस तरह के कुछ words इस्तेमाल करके इस first line को complete कर सकते हैं. And then of course, as I have told you, that the number of years you change and where you have worked, you can add that. And I think this is good answer for the first question. Let's move on to the second. मेजरली पूछा जाने वाला सवाल है, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस. I always suggest people not to talk about weaknesses because इससे आपका एक negative impact पड़ता है. And when you talk about a weakness which is in a positive way, but अगर उसमें intrude question हो गया, जैसे इंटरव्यूअर ने आपको उसी के बारे में कुछ आगे सवाल किया, तो हो सकता है आप थोड़े से negative दिख जाएं. So just to save yourself, I would suggest to stay somewhere near to this line, or you can craft your own language around. About strength, I would suggest write your strengths on a piece of paper and then क्योंकि हर इंसान के अलग अलग strengths हैं, right? आप यहाँ से कॉपी करके हो सकता है strength बोल सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यूअर ने आपको कहा कि आप एग्जाम्पल पोर्ट्रे कीजिए अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में इन स्ट्रेंथ्स के इर्द गिर्द, या फिर उन्होंने बोला एक्सप्लेन अबाउट इट, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है. सो इंडिविजुअल विल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स. आप अपनी स्ट्रेंथ लिखिए and those strengths should be those जो आप explain कर सके अच्छे से. Let's take an example. अगर मुझसे पूछा जाएगा working with other people, what do you mean by that? So I would say I'm good at working with people. I'm a team player. Be it in inter-department or intra-departmental issues, I always used to talk to my colleagues to clear all the confusions regarding any guest issues or queries to achieve one target together, which is guest satisfaction, 100% guest satisfaction. तो इस तरह का मैंने आंसर दिया. Let's say they're talking about time management, तो वो मुझसे पूछेंगे what do you mean by time management? So I always have this good habit of writing down my task for the day on my notepad, and then I prioritize them as per the priority list. अगर कोई काम पहले खत्म करने का है and it is going to take much of a time and it is directly associated with the guest issues or queries, I will finish that work first, and according to my priority list, I will keep those works towards the end of my shift जो कि कम priority पे है. तो इस तरह से आपको अपनी strength को explain करना आना चाहिए. नेक्स्ट इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ. बहुत लोग एक गलती करते हैं कि वो एक डेजिग्नेशन बताते हैं कि मैं अपने आप को इस डेजिग्नेशन पे या उस डेजिग्नेशन पे देखता हूँ. डू नॉट से दैट. कीप इट ओपन. जैसा आप देख रहे हैं आंसर में, कीप इट ओपन एंड एसोसिएट योर ग्रोथ विथ कंपनीज ग्रोथ. उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आपने कंपनी के बारे में अच्छे से पढ़ा है, आपने कंपनी के बारे में स्टडी किया है और तब आप यहाँ पर आए. सेकंड इम्पॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के आंसर में मिररिंग द क्वेश्चन. जब आप किसी के क्वेश्चन को मिरर करते हैं वो बहुत स्मार्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन लगता है, जैसा कि अभी हम देखते हैं. I will not be able to tell you the exact designation where I see myself in 5 years from now. तो देखा आपने, where I see myself in 5 years from now. Question है where do you see yourself from 5 years in 5 years from now. तो ये आपने मिरर किया. एंड जो मैंने पहला पॉइंट बताया था, डू नॉट टॉक अबाउट एग्जैक्ट डेजिग्नेशन, पर आगे का देखिए आंसर क्या है. However, looking at the continuous growth of your company, I'm sure it is going to add lots of learning and growth to my career, which will help me to climb the ladder of success.
तो आपने उनकी कंपनी की भी तारीफ कर दी, मतलब उन्हें जता दिया या बता दिया कि मैंने आपकी कंपनी के बारे में भी पढ़ा है. ठीक है. So this leaves a very good impression. Let's move on to the next question. Why do you want this job? Now यहाँ पर मैंने नोटिस किया है काफी सारे लोग अपनी डेजिग्नेशन और सैलरी के बारे में बात कर देते हैं. For the better salary, for designation growth. I would suggest do not talk about it. क्योंकि ये आपके negative parts में count होता है that the candidate is only focused either on the promotion or the salary, not on learning part and all, right? तो आप इसका आंसर सिंपल रखिए, for the betterment of my career growth, right? Now, we'll discuss about one more question here. Why should we hire you? Now, you first need to understand why company or the interviewer is asking this question to you, because they want to see that what value you are going to bring to their company. तो आपको ऐसा कोई आंसर बनाना है जो कि आपकी स्ट्रेंथ के इर्द गिर्द हो, प्लस आपका कोर डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, प्लस उस स्ट्रेंथ और कोर डिपार्टमेंट के को रिलेशन में आपने कुछ अचीव किया हो, दैट कुड बी रिवॉर्ड, रिकग्निशन और एनी अवार्ड और एनीथिंग विच यू हैव अचीव्ड और एनी गुड सिचुएशन हैंडलिंग और एनीथिंग कुड बी. तो आपको इसका आंसर कैसे देना है वो देखिए. So I would say I believe the great customer service starts with a great relationship and communication, and that is my strength. In my work history, I was awarded several times for impactful customer service and support. तो जो 3 points मैंने आपको बोले कि मेरी strength क्या है, great relationship and communication, और customer service जो मेरा department रहा है मैंने उसकी बात कर दी, and then मैंने अपने award की बात कर दी कि मुझे लोगों ने काफी बार recognize किया है इस चीज के लिए. तो ये सुनकर उन्हें पता चलेगा कि ओके फाइन, सो दिस इज द वैल्यू ही और शी इज गोइंग टू ब्रिंग टू आवर कंपनी. ठीक है. तो आज के लिए हम इस प्रेजेंटेशन को यहाँ पर एंड करते हैं. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में विल टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस टू नो मोर अबाउट दीज बेसिक क्वेश्चन आंसर्स फॉर एन इंटरव्यू. अब जाते जाते मुझे आपसे एक सवाल करना है जो बहुत सारे होटेलियर्स से मैं करती हूँ, एंड दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन. क्या आप सभी को पता है that नंबर 13 होटल इंडस्ट्री में क्यों नहीं यूज होता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा. that why number 13 is haunted, why we do not have table number 13, room number 13, floor number 13, even the extension number 13 in all the hotels. I'm sure by now you know how to answer the same questions in a different and unique way, right? जो आपने भी देखा होगा कि जब आप सेम चीज़ को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, right? So yes, if you have any questions regarding this video, please comment below and I shall answer those queries. And until then, stay safe and see you next time. Thank you for watching.